Hi, hello, namaskar to all the viewers of this channel who wants from CA aspirants to CA achievers, my dear students. As already we have completed two problems on this rectification of errors after preparing the trial balance. I mean, after preparing the trial balance before preparing the final accounts. Here, what and all the things as a student that we have to remember before starting the class 7. Let me explain some important things. As we know, there are five panchatarayas. Panchataраyaru, asset and expenses, debit the increase हुआ तो debit करना, decrease हुआ तो credit करना, capital, liabilities and income. They are opposite of these two. Increase हुआ तो credit करना, decrease हुआ तो debit करना. Apart from this, when we are into the solution of rectification, after preparing the trial balance, before preparing the final account, we have to open a one account called suspense account. Now the question, when the suspense account arises, please remember suspense account arises only in case of one-sided errors. What are one-sided errors? The errors which affect the agreement of trial balance. Okay, what they are? Partial omission of error, error of commission, means wrong totaling, wrong side, wrong recording, wrong amount, wrong account we are recording, wrong side we are recording less or more amount, over cost, under cost. These are all the examples where we have to use the suspense account. Okay, fine, sir. How to remember those things? How to record those things? My dear student, remember for this I take a few examples before going for solution to this particular problem, my dear student. See here, sales book under cost. See, how to analyze. Sales is what? Income. Income is what? It is a credit. ये तो क्या हुआ? अंडर कास्ट हुआ. अंडर कास्ट बोले तो क्या करना? Record in the same side. Record in the same side means sales account is to be taken in the credit side. When you are taking sales account in the credit side, then what is to be taken the debit side? That what is there now, what is to be taken the debit side now, that is called, my dear students, we have to take suspense account on the debit side. Then what is the entry? Suspense account debit to sales account. I take another example, my dear students, that is purchase returns book. What book? Purchase returns book. क्या हुआ? Over cost हुआ. What do you mean by purchase returns? Purchases expenses, purchase returns opposite. Purchases means expenses, purchase returns means opposite. Purchase means expenses debit, purchase returns means opposite. We have to take credit. क्या हुआ ये? ओवर कॉस्ट हुआ. ओवर कॉस्ट बोले तो क्या करना? This purchase returns is to be taken in opposite side. When you are taking this in the opposite side, it comes in the what side? Debit side. What comes in the debit side? Here the sale purchase returns comes in the debit side. So purchase returns account debit. Then what is to be written the credit side? That is, my dear students, as a suspense account. Okay, I take another example, which is a very important example, my dear student. Let me see. Okay, fine. Please, if you want, you can make a note of it whenever you are writing as a points to be remembered. Instead of just listening, you have to make a note of it. Sold goods to Sudhakar, rupees 100 is debited to his account, rupees 80. Tell me how we have to pass the entry for here. First you analyze. See where the mistake is done. Here the mistake is done his account. His means what? Sudhakar.
Now, sold goods to Sudhakar. Mistake is done where Sudhakar's account. So, mistake is not done in sales account. Sales account is not to be considered when you are going for rectification. Okay. Sold goods to Sudhakar. Who is Sudhakar when you are selling? Sudhakar is a debtor. सुधाकर को क्या करना? डेबिट करना. कितना डालना सुधाकर को डेबिट में? 100 डालना. आप क्या किए? सुधाकर को डेबिट ही किए. क्या करना था? डेबिट करना था. विथ कितना अमाउंट डालना था? 100 रुपीज, 100 डालना था. सुधाकर को आपने क्या किए? डेबिट ही किए, करेक्ट किए, डेबिट ही किए, बट कितना दिए? 80 रुपीज लिए आपने. डेबिट करना था 100 रुपीज, डेबिट ही किए 80 रुपीज. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड, माय डियर स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 100 यू हैव टेकन, दिस इज कॉल्ड अंडर डेबिट. अंडर बोले तो किधर डालना? उधर ही डालना. उधर ही डालना बोले तो किधर डालना? डेबिट ही डालना. कितना अमाउंट लेना? 100 रुपये में 80 गए, 80 गए, आप 80 रुपीज गया. 100 में 80 गए तो कितना आता? 20 रुपीज आता. क्या करना? डेबिट ही करना. किसको डेबिट करना? सुधाकर को डेबिट करना. व्हेन यू आर डेबिटिंग सुधाकर, देन व्हाट इज द एंट्री? सुधाकर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सस्पेंस अकाउंट. कितना लेना? 20 लेना. मालूम हुआ क्या बोले मैं? डिड यू अंडरस्टूड? डेबिट ही करना था, डेबिट ही किए, बट व्हाट लेफ्ट? As a student, you face difficulties. Why Sudhakara didn't took? Why this fellow, while teaching, why this fellow left the sold? Because, my dear student, here the mistake is happened not in the sales account, but the mistake is happened in Sudhakar's account. That is the only point where the student fails to understand. If you understood this concept, you enjoy a lot in your rectification. That much easy, but point to point you need to have a specification, you need to have your concentration, you need to have your love and affection when you are learning the subject. That is what that Sudhakara, that is what myself is expecting from my students. I take another example, similar example. See what happens. Please make a note of it, just don't spend in listening. Sold goods to Sudhakar, rupees 100 is credited to his account as rupees 80. Now tell me, my dear student, please concentrate where the mistake is done. Sudhakar 100 rupees बेचे, credited to his account. His बोले तो कौन इधर? That fellow Sudhakar. That's all. Now where the mistake happened? Mistake not happened in sales. Mistake happened only in Sudhakar. Now tell me, my dear student, when sold goods to Sudhakar, who is Sudhakar? Sudhakar is your debtor. Debtor को क्या करना? डेबिट करना. कितना अमाउंट लेना? 100 रुपीज लेना. ये तो करेक्ट डेबिट है. मगर एज ए अकाउंटेंट व्हाट यू हैव डन, आपने क्रेडिट किए. किसको क्रेडिट किए? सुधाकर को क्रेडिट किए. और क्रेडिट करे, कितना अमाउंट लिए क्रेडिट टाइम पे? 80 रुपीज. क्या हुआ? ये रॉन्ग क्रेडिट हुआ. सिमिलर एक्सप्लेनेशन. नाउ टेल मी हाउ टू रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. एज आई टोल्ड यू, कीप द करेक्ट इन द सेम प्लेस, कीप द करेक्ट इन द सेम प्लेस, कीप द करेक्ट इन द सेम प्लेस, keep the correct in the same place. Always we have to repeat. 100 times we have to repeat. Keep the correct in the same place. Shift the wrong in the opposite place. ये तो क्रेडिट है ना, रॉन्ग क्रेडिट है ना, इसको किधर डालना? डेबिट में डालना. सो ये तो करेक्ट डेबिट है, ये भी डेबिट में आता. आफ्टर रेक्टिफिकेशन ये भी डेबिट होता. कौन कौन डेबिट होता? सुधाकर डेबिट होता, अगेन सुधाकर डेबिट होता. पहले सुधाकर को कितना लेना? 100 रुपीज लेना. दूसरा सुधाकर को कितने लेना? 80 रुपीज लेना. बोथ आर सुधाकर ओनली, द नेम इज सेम. वो सुधाकर डेबिट करना, ये सुधाकर रॉन्ग क्रेडिट हुआ है, उसको भी डेबिट करना.
कुल मिला के कितना हुआ, ओ बी डेबिट ए बी डेबिट. नाउ आई राइट in expanded form like सुधाकर अकाउंट डेबिट 100. बाद में क्रेडिट हुआ है ना सुधाकर, उसको डेबिट में लगाना नहीं, लेना, लेके आना. Sudhakar's account debit 80. I'm trying to learn Hindi. If there is a mistakes in Hindi, please forgive me. Okay, I'm not going to imitate any language. I want to use different languages like English, Kannada and also Hindi. Here and there I use Telugu also. My intention is not to hurt any languages. My intention is to learn all the languages so that I can make my teaching so effective for my students. Okay, Sudhakar's account debit 100. सुधाकर अकाउंट डेबिट 80. क्या करना, अब किधर डालना, अपोजिट नहीं है बिकॉज सेल्स तो कट हो गया, उसको करेक्ट एंट्री किए आप. देर वी आर गेटिंग सस्पेंस अकाउंट. हाउ मच आई हैव टू राइट, 180. नाउ if you can learn like this, you can learn like this in your textbook, in your material, but when it comes to exam we are not supposed to write Sudhakar 2 times. Then now how we have to write it in main exam of ICAI board? in answer script में कैसे लिखना, 2 बार सुधाकर नहीं लिखना, एक ही बार लिखना. कैसे, सुधाकर अकाउंट डेबिट, सुधाकर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. कितना अमाउंट लेना, 180. कुल मिला के कितना हुआ, 180. Here 180. I hope my dear students you got it. Under cost, over cost, under debit, डेबिट किए सेम अकाउंट में, क्रेडिट किए अपोजिट अकाउंट में. These are all the ways in which we have to go for rectification, my dear students. Shall we go for answer for this particular solution? I hope now you got it. I'm thinking so. Very often I'm telling you, please give your reply, subscribe the channel, give your likes. Okay, it helps me a lot. See here a question, class 7. It is from a study material of our ICAI board. It is being asked in illustration 7 of ICAI board. Write out the journal entries to rectify the following errors using suspense account. What account we have to use? Suspense account. Are you given with any suspense account, excess, debit, credit? No. If we asked you to prepare suspense account, then only we have to prepare suspense account. Otherwise, no need to prepare suspense, just you pass the entries. Fine. See, my dear students, goods of the value 100 returned by Sharma. What happened, my dear students? Returned by Sharma. Returned by Sharma means it is a sales returns. सेल्स रिटर्न्स किधर आता, सेल्स क्रेडिट होता, सेल्स रिटर्न्स डेबिट आता. सो वी हैव टू टेक इट इन डेबिट साइड. वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक. किधर एंट्री किए, सेल्स में एंट्री किए. सेल्स मीन्स इनकम होता, इनकम मीन्स इट इज अ रॉन्ग क्रेडिट हुआ. पोस्टेड देर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. वेर इट इज टेकन, देर फ्रॉम पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट. Who is his? Here his is nothing but what? Sharma. Who is Sharma here? Sharma to debtor. When the goods returned by Sharma, the debtor decreases. Debtor को क्या करना, क्रेडिट करना. आप क्या किए शर्मा को, his means शर्मा. शर्मा को आपने क्या किए, क्रेडिट ही किए. I repeat my explanation, please be careful. Goods of the value 100 returned by Sharma. Returned means what? Sales return. Sales returns क्या करना, डेबिट करना. Who returned? Sharma returned. Who is a Sharma? Sharma is a debtor. When goods returned by Sharma, sales returns आया, debtor आया. debtor क्या हुआ, अब debtor तो डिक्रीज होता. debtor डिक्रीज हुआ तो क्या करना, क्रेडिट करना. Were entered in the sales day book. Unfortunately, you entered in sales book. It is a wrong credit. And posted there from to the credit of his account. His account बोले तो शर्मा. शर्मा अकाउंट को आपने क्या किए, क्रेडिट किए. क्या करना था, क्रेडिट ही करना था. शर्मा को क्रेडिट ही करना था. शर्मा को आपने क्रेडिट ही किए. सो शर्मा इज टू बी इग्नोर्ड. शर्मा इज नॉट टू बी कंसिडर्ड बिकॉज इन द शर्मा's book entry is correctly made. Where the mistake is done? Mistake is done in sales returns and sales book. Because sales returns में
डेबिट करना नहीं किए, सेल्स रिटर्न्स में क्रेडिट करे रॉन्ग. नाउ व्हाट इज योर रेक्टिफिकेशन? कीप द करेक्ट इन द सेम प्लेस, शिफ्ट द रॉन्ग इन द अपोजिट प्लेस. ये तो रॉन्ग क्रेडिट है ना, किधर आता अब? डेबिट साइड में आता. नाउ व्हाट इज योर एंट्री? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट. शर्मा नहीं यूज करना. रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू, आई एम स्पेंडिंग मोर देन 6 to 7 minutes ओनली फॉर दिस शर्मा. शर्मा यूज नहीं करना. क्यों यूज नहीं करना? शर्मा को आपने करेक्ट क्रेडिट डाले. शर्मा इज फिनिश्ड, शर्मा एंट्री करेक्ट. Then what we have to use? There we have to use our apad bandhava, the person who rescues us. Here the person who rescues us is suspense account. अब एंट्री क्या होता? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट to suspense account. That is the first entry we have to write with 100 rupees. Shall we pass the entry now? Rectified journal entry is your heading. लिखें, rectified journal entry is your heading. Okay, now what is the first transaction? It is number 1. क्या लिखना अब? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू क्या आता? सस्पेंस अकाउंट आया. कितना अमाउंट डालना? ये तो 100 डैश 100 डैश डैश 200. नरेशन क्या लिखना? बीइंग रॉन्ग क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट इज रेक्टिफाइड. Wrong credit to sales account is rectified. हुआ है ना? Okay, let me move on to the next transaction. An amount of 150 returned entered in the sales returns book. किधर एंट्री किए? सेल्स रिटर्न्स बुक में एंट्री किए. Has been posted to the debit of Mr. Philip. किधर एंट्री किए? Mr. Philip. Where debit? Who returned the goods? Now tell me. An amount of 150 entered in the sales returns book. सेल्स रिटर्न्स बुक में एंट्री हुआ. सेल्स रिटर्न्स बोले तो क्या? डेबिट होता. राइट. हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ फिलिप. हु इज फिलिप? फिलिप इज योर डेटॉर. व्हेन सेल्स रिटर्न्स हुआ, डेटॉर डिक्रीज्ड. डेटॉर डिक्रीज हुआ तो क्या करना? क्रेडिट करना. बट आपने क्या किए? फिलिप को क्या किए? आपने फिलिप को क्या किए? डेबिट किए. सो इट इज अ रॉन्ग डेबिट. नाउ टेल मी, is it necessary to take the sales returns? This is the only area the students are misunderstanding with this particular transaction. इधर wrong किधर हुआ? Is it sales returns में हुआ और Philip में हुआ? An amount of 150 return entered in the sales returns book. वो sales returns book में एंट्री हो गया. सेल्स रिटर्न्स बुक में एंट्री हो गया मतलब सेल्स रिटर्न्स को आपने इग्नोर करना. बिकॉज नथिंग इज रॉन्ग इन सेल्स रिटर्न्स बुक, बिकॉज द एंट्री इज ऑलरेडी मेड इन सेल्स रिटर्न्स बुक. उसमें तो करेक्ट एंट्री हो गया. व्हेन इट इज एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न्स बुक, फिलिप को क्या करना था? इट इज ए गुड्स रिटर्न्ड बाय डेटॉर. डेटॉर डिक्रीज होता, असेट डिक्रीज हुआ तो असेट को डेबिट क्रेडिट करना था. बट अनफॉर्चुनेटली माय डियर स्टूडेंट, व्हाट यू हैव डन? What this question paper setter has done? He has debited to the Philip account. Instead of credit to Mr. Philip, instead of crediting to Mr. Philip, he has debited to Mr. Philip. Now how to rectify? I told you na, keep the correct in the same place, shift the wrong in the opposite place. क्या करना अब? क्या करना? Now what the entry that you need to pass? Debit to credit करना. सो मिस्टर फिलिप 2 बार क्रेडिट करना. किसको डेबिट करना? दैट इज अवर आपद बांधवा, द पर्सन हु रेस्क्यूज अस. फॉर दिस एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, टू मिस्टर फिलिप. डू यू थिंक इन एग्जाम shall we write Mr. Philip 2 times? No, my dear students. We have to write Mr. Philip only 1 time, but take the amount 2 times. That is amount कितना है? 150 है. अब एंट्री क्या हुआ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप 150 प्लस 150. So now let us write. ये तो बहुत लॉजिकल सेंटेंस है. ये चैप्टर ही बहुत लॉजिकल लर्निंग. You need to have a lot of love and affection, your concentration, your mind application. To Mr.
फिलिप्स अकाउंट, कितना अमाउंट डालना, 150 प्लस 150 कितना हुआ, 300. Being wrong, debit to Mr. Philip is rectified. I think you got it. Hopefully, I think you got it, right? Now let me move on to the next one. A sale of 200 made to घनश्याम. क्या किए आपने, सेल किए, किसको सोल्ड किए, घनश्याम को सोल्ड किए. घनश्याम मतलब डेटॉर, घनश्याम मतलब डेटॉर. Sometimes it will give some problem, this pen. घनश्याम, who is घनश्याम, डेटॉर. Was correctly entered, क्या किया आपने, was correctly entered. घनश्याम is debtor, right? Who is घनश्याम, घनश्याम is debtor. When you sold goods to घनश्याम, घनश्याम को debtor, घनश्याम को क्या करना था, आपको डेबिट करना था, करेक्ट डेबिट. Correctly entered in the sales day book. Yappa, see the wording. Amma I used to say, correctly entered in sales day book. Oh, sales day book में correct entry हो गया. Sales day book में correct entry हुआ तो sales को क्या करना, हमें strike out करना. We should not take the sales for our rectification because sales में entry correct हो गया, हम बच गए. Wrong किधर हुआ, घनश्याम में हुआ. See, but wrongly posted to the debit of राधेश्याम 20. ओ, घनश्याम में डालना था, आपने घनश्याम छोड़ गए, राधेश्याम में डाले. डालने के टाइम पे अमाउंट भी डिफरेंस है. किसको डेबिट किए, राधेश्याम को डेबिट किए एज ए रॉन्ग डेबिट with an amount of rupees. How much, my dear student? It is a wrong 20 rupees in the घनश्याम. I hope now you got it. कैसे रेक्टिफिकेशन करना, कीप द करेक्ट इन द सेम प्लेस, शिफ्ट द रॉन्ग इन द ऑपोजिट प्लेस. मालूम हो रहा है ना. अब सेल्स को नहीं लेना, वही क्यों सेल्स को नहीं लेना, बिकॉज सेल्स में एंट्री करेक्ट है. किधर रॉन्ग हुआ, राधेश्याम घनश्याम में डालना था. कितना अमाउंट डालना था, राधेश्याम में 200 डालना था. इंस्टेड ऑफ राधेश्याम you have instead of घनश्याम you have recorded where, राधेश्याम पे रिकॉर्ड किए. अब कैसे करना, I told you ना, keep the correct in the same place, shift the wrong in the opposite place. First you do that. ये तो घनश्याम डेबिट करना था, डेबिट ही करो. So for this entry will be घनश्याम अकाउंट डेबिट 200, राइट है ना, 200 लेना. राधेश्याम तो रॉन्ग डेबिट हुआ. राधेश्याम अब किधर आता, क्रेडिट साइड में आता. राधेश्याम डैश 20, वो 200 में 20 का आया तो कितना आया, 180 आया. दस 180 goes to suspense account called आपद बांधवा. Tell me, my dear students, really did you understood or not? Be practical in giving your answer. Try to have a lot of love and affection towards learning, especially this chapter. This is such a chapter which gives you a vast knowledge. This chapter will make you king of accountancy, queens of your accountancy subject. मालूम हुआ है ना, घनश्याम को डेबिट करना था, so I debited. राधेश्याम में रॉन्ग डेबिट हुआ है, so I took it on credit side. अमाउंट भी डिफरेंस है और डिफरेंस 180 आया. 180 किधर जाता, अब सस्पेंस अकाउंट में जाता. Now the third entry will be, that is घनश्याम्स अकाउंट डेबिट 200 dash to राधेश्याम्स account dash 20. Difference goes to where, सस्पेंस अकाउंट डैश 180. अब क्या लिखना, नरेशन. तो नरेशन बहुत ही सिंपल. बीइंग रॉन्ग डेबिट टू राधेश्याम इज रेक्टिफाइड. डोंट गिव नरेशन in terms of 3, 3, 4, 4 lines. Try to be so smart in giving the narration. Being wrong debit to Radhesham is rectified. Fine. Shall we move on to the next transaction, my dear students? See what happened. Bad debts aggregating rupees 450 were written off during the year. This year, during the year you have written off.
It is not recovered, as that we learned in previous cases. Now it is written off in the sales ledger. Oh, sales ledger में written off हुआ. So sales ledger में entry हुआ. Sales ledger में क्या हुआ? Entry हुआ. Sales ledger में entry हुआ तो sales को छोड़ना, because it is entered in sales ledger, but were not posted to the general ledger. Not posted to general ledger means not posted in कौन सा अकाउंट? बैड डेट्स अकाउंट. मालूम हो रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बैड डेट्स आया दिस ईयर, नॉट प्रीवियस ईयर. बैड डेट्स तो दिस ईयर में है. वो बैड डेट्स सेल्स लेडजर में रिकॉर्ड हो गया, बट जनरल लेडजर में नहीं हुआ. What, which one is general ledger here? Bad debts is your general ledger. Now tell me, my dear student, this bad debts is called what? Bad debts is a expenses. Expenses means what? It is a correct debit. Did you record it in bad debts? Did you record it in general ledger account? No, ये एंट्री नहीं हुआ जनरल लेडजर में. अब क्या करना? डेबिट करना. सेल्स लेडजर में हुआ है, सेल्स लेडजर को छोड़ देना. अब एंट्री क्या होता? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट. क्रेडिट साइड में क्या लिखना? वही क्वेश्चन मार्क. वेर एवर यू गेट क्वेश्चन मार्क, दैट इज अवर आपद बांधवा. दैट आपद बांधवा इज सस्पेंस अकाउंट. I hope you understood. Bad debts account debit to suspense account. Now let us write. कौन सा एंट्री है? फोर्थ एंट्री है ना. सो लिखो अब bad debts account debit to suspense account. How much amount, my dear students? An amount of rupees 450 dash 450 हुआ. Now let me move on to the last entry. A total of discount allowed. Oh, discount allowed. Discount allowed बोले तो expenses बोलते हैं ना. डिस्काउंट अर्नड बोले तो इनकम कते बोलते हैं. डिस्काउंट इज अलाउड टू हुम? अवर कस्टमर. डिस्काउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम हुम? अवर सप्लायर, अवर वेंडर, अवर क्रेडिटर. am I right? सो डिस्काउंट अलाउड तो हमें क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस कते बोलते हैं. एक्सपेंसेस को क्या करना जी? डेबिट करना. वो तो करेक्ट डेबिट है. अलाउड इन द कैश बुक ऑफ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो तो कैश बुक में है. दिस 3 कॉलम कैश बुक आता है ना पीयूसी में. यू हैव लर्नड कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, बिकॉज ऑल द 3 comes in cash book. That why it is called 3 column cash book. 2020 amounting to rupees 250 was not posted. Not posted means not recorded in discount allowed account. When it is not posted in discount allowed account, we have to post it. कैसे पोस्ट करना? When you are posting, where does it comes? It comes in same debit side. Discount allowed account debit 2. क्या लिखना? वही आपद बांधवा. Who is our आपद बांधवा? Suspense account. I hope you got it right. Amount is how much, my dear students? It is an amount of rupees 250. Discount allowed account debit to suspense account 250 dash 250. Being discount allowed is now posted. What the narration is? Being discount allowed is now posted. I hope you got it right. Please make a very good note of this particular problem, wherein before starting this problem I give some what we call points to be remembered, hints. Keep those hints in your mind, concentrate on this problem. Now onwards you should put efforts in learning this rectification of errors. Thank you. Take care. Bye bye. Namaskar.